अस्सलाम वालेकुम। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल जो पोएम हमने पढ़ी थी चाइल्डहुड, वो अधूरी रह गई थी इस वजह से कि एक कॉल आ गई और मेरा वीडियो जो है वो अधूरा रह गया। फिर मैंने ऐसे ही उसको डाल दिया था ग्रुप में। तो इंशाल्लाह आज हम इस पोएम को फाइनल टच दे देंगे। आप अटेंटिव रहना। Dear students, in this poem, the poet laments the loss of his childhood. It was a time when he sincerely believed that there is a heaven and hell. It was a time when he believed that the adults really meant what they said. इस नज़म में शायर अपने बचपन के खो जाने पर दुख का इजहार करता है। ऐसा वक्त था बचपन का जब वो सचमुच ये मानता था कि जन्नत और दोज़ख होते हैं। ये वो वक्त था जब वो ये मानता था कि बड़े लोग जो भी कहते हैं सच कहते हैं। वो मानता था कि लोग सचमुच एक दूसरे से प्यार करते थे जब वो प्यार की बातें करते थे और प्यार करने की तालीम देते थे। ये वो वक्त था जब इसने ख़ुद को दूसरों में से एक समझा था। इसने ये नहीं सोचा था कि वो किसी भी तरह से मुख्तलिफ है, लेकिन अब वो सारी मासूमियत ख़त्म हो चुकी है। अब वो सोचता है कि जन्नत और जहन्नम हकीकत में कोई जगह नहीं है। अब वो लोगों को प्यार की बातें करते हुए और मोहब्बत की तालीम देते हुए देखता है, लेकिन वो ये भी देखता है कि वो प्यार मोहब्बत से, यानी बड़े लोग जो हैं प्यार मोहब्बत से काम नहीं लेते हैं। अब वो सोचता है कि इसकी अपनी एक अलग शनाख्त है और वो ख़ुद को दूसरों से मुख्तलिफ महसूस करता है। सो स्टैंजा नंबर 3 जो कल अधूरा रह गया था वो हम पढ़ने जा रहे हैं। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? To use whichever way I chose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone. Was that the day? When did my childhood go? The poet in these lines says that he doesn't know when he lost his childhood. He says that it could perhaps be the time when he felt himself different from others. He realized that his mind was really his own mind. In other words, he realized that his mind thought differently from others. He had an independent mind which he could use any way he liked. His thoughts were not the thoughts of other people. They were his own personal thoughts. A sense of ego had developed in him. He no longer thought himself as one among others. He thought himself to be a unique person. The poet says that it was perhaps this ego that he lost his childhood. कहते हैं कि When did my childhood go? मेरा बचपन कब मुझसे जुदा हो गया, चला गया मुझसे। ये कहते हैं शायद ये वो वक्त था। Was it when I found my mind was really mine? यानी वो वक्त, क्या ये वो वक्त था जब मुझे ये पता चला कि मेरा दिमाग जो है वो दरअसल मेरा ही दिमाग है। यानी इससे पहले वो दूसरों के दिमाग से सोचता था, इससे पहले वो दूसरों के ख़यालात पर चलता था। अब उसे समझ आया कि मेरे ख़यालात जो हैं वो यूनिक हैं, वो लामिसाल हैं। यानी मैं अपने दिमाग से अपना ही तर्ज़ अदा देखकर सोच रहा हूँ, अपने ही तरीके से सोच रहा हूँ। तो ये जब उसको पता चला तो ये कहते हैं शायद ये वो वक्त था जब मेरा चाइल्डहुड मुझसे जुदा हो गया। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़ का मतलब ये है कि मैं किस अंदाज से इस सोचना चाहता हूँ, उसी तरीके से मैं अपने दिमाग को इस्तेमाल करता हूँ। क्या ये वो वक्त था जब मैंने ऐसा करना शुरू किया? प्रोड्यूसिंग थाट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। ऐसे ख़यालात मेरे दिमाग में जब आने लगे जो दूसरों के ख़यालात से मेल नहीं खाते थे, जो दूसरों के ख़यालात नहीं होते थे। बट माई ओन, बल्कि किसके थे? मेरे, अपना ही अंदाज़ था, मेरे ख़यालात का अपना ही अंदाज़। एंड माइन अलोन, और सिर्फ़ मेरे।
वाज दैट द डे, क्या ये वही वक्त था, वही दिन था जब मैं अपने बचपन को अलविदा कह चुका था। यानी जब मुझे ये पता चला कि मेरा माइंड जो है ये दर हकीकत मेरा ही है, मैं अलग से सोच रहा हूँ, मैं मुख्तलिफ़ तरीके से सोच रहा हूँ। पहले मैं सोचता था कि सब लोगों के ख़यालात एक जैसे हैं, लेकिन जब से मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे ख़यालात जो है ये यूनिक है, इनका कोई दूसरा सानी नहीं है, तो उस वक़्त से शायद मेरा बचपन मुझसे जुदा हो गया। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा, व्हेयर डिड माय चाइल्डहुड गो? It went to some forgotten place that is hidden in an infant's face. That is all I know. मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया? पहले था when, कब चला गया, अब कहाँ चला गया, किस जगह पर चला गया? In these lines, the poet doesn't know where his childhood has gone, which is the place. He says that it has gone to some forgotten place. It has gone, this childhood has gone to some forgotten place. It could be hidden in some infant's face, and that place is hidden in an infant's face. That is the only thing he can say about it. The poet means to say that childhood remains only as long as one is an infant. As one grows in years, the innocence of childhood starts disappearing. So, इस स्टंजा में ये कहते हैं, Where did my childhood go? मेरा childhood कहाँ चला गया? It went to some forgotten place. ये किसी forgotten place में चला गया है. Forgotten यानी जिसको हमने भुला दिया हो, जिसका पता ना हो, जिसको हमने forget कर दिया हो, भुला दिया हो. Forgotten place that is hidden in an infant's face. वो जगह जो छुपी हुई होती है एक मासूम के चेहरे में, मासूम के चेहरे में वो जगह छुपी हुई होती है. वहाँ पर मेरा बचपन चला गया है, उस जगह पर चला गया है. तो इस तरह से पोएट जो है इस पोएम में ये कहता है कि मेरा बचपन जो है शायद उस जगह पर चला गया है जहाँ एक मासूम का चेहरा होता है, एक मासूम का, इन्फेंट का चेहरा होता है. इसका ये मतलब है कि ये कहता है कि असल में इन्फेंसी में ही मेरा चाइल्डहुड मौजूद था. उसके बाद जो जो मैं बड़ा होता गया, जब मैं ग्रो अप होने लगा तो मेरा बचपन चला गया, मुझसे चला गया. दैट इज़ ऑल आई नो. बस इतना सा ही मुझे मालूम. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट दिस poem, childhood. Students, here are some important questions. Question is, what according to the poem is involved in the process of growing up? Its answer is, as a person grows up, he becomes a rationalist, an egoist, and a hypocrite. He accepts nothing that is not logical. He loses faith in God. He does not believe in hell or heaven. He becomes very conscious of his self. He wants to follow his own desires and ideas. He becomes an egoist. He becomes hypocritical in his behavior. He does not always mean what he says. He talks of love and preaches of love, but it is not so loving in his actions. But he is not loving in his actions. In short, he loses all the innocence of his childhood. So, these steps are involved in the process of growing up. Now, another question is, what is the poet's feeling towards childhood? Answer is, the poet regards childhood as a period of heavenly innocence. A child sincerely feels that there is God above. He is free from all earthly evils. He believes that there is really a heaven and a hell. He is truly religious in his soul. A child knows no hypocrisy.
He always means what he says. There is no difference between his thoughts and actions because he is innocent. A child is free from all any sense of ego. He does not think himself to be different from or superior to others. In short, childhood is a state of heavenly innocence and purity of heart. Now, another important question is, which do you think are the most poetic lines? Why? The last four lines of the poem are the most poetic. Here, the poet creates a lovely image of an infant's face when he says, I, where did my childhood go? It went to some forgotten place that is hidden in an infant's face. So, as one grows in years, the heavenly innocence of childhood begins to disappear. So, students, it's all about the poem Childhood, written by Max Nathan. Have a nice day. Thanks.